Hello students, good afternoon. Now yesterday in the last lecture we have completed the chapter Living World, okay. Today we are going to start with a new chapter Biological Classification, okay beta. So let's talk about the chapter Biological Classification. Okay beta. So when we say biological classification, so in this chapter what we are going to learn? We are going to learn about classification system. Classification systems. Okay. And after that, when we get completed with the classification system, we have to discuss about the different kingdoms. Especially we will be talking about kingdom Monera. We will be talking about kingdom Protista. We will be talking about kingdom Fungi. And we will be talking about what are the viruses and lichens. Okay? So these are the things which we have to go through in this chapter. What are these in the detail? Okay, so let me take you through first. Let's talk about the different classification systems, how the different classifications or classification systems occurred. Classification systems. When we say classification system, there are the different types of classifications. बहुत सारी different तरीके की classifications की गई from the beginning itself. So there is a one type of system of the classification जिसको हम बोलते हैं kingdom classification system. Kingdom classifications. How the different kingdoms have been formed, okay? किस तरीके से different kingdoms जो है वो कैसे बने, किसने बनाए, क्या criteria था, that we will be discussing here. Now in the kingdom classification system there was a period or there was an era when there was the contribution of some scientists, like there was a contribution of Aristotle, Theophrastus and Carolus Linnaeus. In the era of these three biologists, again taxonomists, this is known as the father of biology and zoology, this is the father of botany, and he is known as the father of taxonomy. Okay, by the contribution of these three they tried to classify the organisms. उसने organisms को classify करने की कोशिश की, और at the time it was a primitive time. At that time when they initiated to classify the species of 1.7 to 1.8 million species, इनको classify करने की जब कोशिश की different groups में, okay, so Aristotle and Theophrastus, they first divided all the organisms into the two groups. Based on the simple criteria. Simple criteria they took to divide these organisms. उन्होंने सारे organisms को divide करने के लिए एक simple criteria ले लिया, morphological criteria like habitat, okay, and maybe some other morphological character. So based on the limited number of the
criteria, limited number of the characteristic features. They started to classify the organisms of millions of organisms. Then they divided whole organisms into two groups. They called the kingdom Plantae and kingdom Animalia. Kingdom Animalia. Fine. So all the millions of species, they divided into the two kingdoms, Plantae and Animalia. So exactly they didn't do इंडेंस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, ज्यादा क्राइटेरिया उन्होंने नहीं लिए, बट सिंपल क्राइटेरिया के बेस पे जो है, जो उनको प्लांट जैसे लग गए ऑर्गेनिज्म तो उनको प्लांट में डाल दिया, जो एनिमल टाइप के लगे उनको एनिमल में डाल दिया। ठीक है, तो सिंपल तरीके से डिवाइड किया तो दो किंगडम उस समय बन गए हैं। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जिसमें दो किंगडम्स बन गए हैं बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज साइंटिस्ट। ओके, इवन इन द सेम पीरियड Carolus Linnaeus has also contributed. तो Carolus Linnaeus जो थे, Carolus Linnaeus also divided whole organisms into the same two groups, plants and animals. Okay, but criteria was different, little bit criteria was different from these two scientists. तो Carolus Linnaeus ने criteria जो लिया था, कार्लस लेन्यूस का जो क्राइटेरिया था, तो उसने क्राइटेरिया लिया जस्ट व्हाट इज द सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म्स दे आर द यूनिसेल्युलर, वेदर दे आर द मल्टीसेल्युलर टाइप ऑफ दैट, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेल, type of the cell, whether this cell is prokaryotic or whether this cell is eukaryotic. Okay, and same the criteria he took, like mode of nutrition, what is the mode of nutrition in that. Okay, then he took the criteria of reproduction. Okay, so these were some of the criteria जो कार्लस लेन्यूस ने इन क्राइटेरिया के बेस पे जो है ऑर्गेनिज्म्स को, सारे ऑर्गेनिज्म्स को दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। एंड देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइटेरिया गिवन बाय द कार्लस लेन्यूस। ठीक है, इन द सेम period it was a Carolus Linnaeus who gave the concept of sexual or androgenic classification system. ठीक है, now this was the one concept which the Carolus Linnaeus has given. The Carolus Linnaeus exactly they tried to classify the plant species based on the morphology of androecium and gynoecium in the flower. Okay, androecium represents the male reproductive part, gynoecium represents the female reproductive part of the flower. So based on the study of male and female reproductive structures of the flower, तो कार्लस लेन्यूस ने उस सिस्टम को अलग ही एक नाम दिया था, सेक्सुअल और एंड्रोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आल्सो, बट दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी उसी समय उन्होंने दिया था जब वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। सो ऑन एन एवरेज that period when Aristotle and Theophrastus and Carolus Linnaeus they contributed their thoughts, they contributed into the classification system. So all of these have given us the two kingdom classification, two kingdom systems. So that period is known as two kingdom classification system. टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है ना, सो फर्स्ट किंगडम जो बन गया था वो टू किंगडम बन गया था, जिसमें किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया बन गया था।
ठीक है. So kingdom Plantae and kingdom Animalia, these two kingdoms have been formed. Now नीट में रिमेंबर, नीट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपको कि when the two kingdom classification system has been formed, then which organism was in which kingdom. ओके, ये आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना है. Say for example, किंगडम प्लांट के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म थे जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना था. तो किंगडम टू प्लांट के अंदर बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे, ठीक है, देन एल्गाइज थे, फंगाइज थे, and then all the plant categories, then that is all the bryophytes, pteridophytes, angiosperm, gymnosperm, these were all in the kingdom Plantae, Now kingdom Animalia में कौन कौन थे. kingdom Animalia में protozoans थे, then there were vertebrates and invertebrates, ठीक है. So vertebrates, invertebrates and protozoans, they were included in the kingdom Animalia during the two kingdom classification system. ये आपको याद रखना है, इस पे नीट में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है. Remember this. So this is the first kingdom, two kingdom classification system जिसको हम बोलते हैं. Now in this two kingdom classification system, if we see what were the drawbacks of the two kingdom classification system, what were the drawbacks of two kingdom classification system, ठीक है. So the drawbacks of the two kingdom classification system were that the organisms, whole organisms, they were not classified specifically, ठीक है. तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे तरीके से क्लासिफाई नहीं किए गए थे, बिकॉज लिमिटेड क्राइटेरिया लिया गया था उनको क्लासिफाई करने के लिए. सेकंड थिंग, इसमें ड्रॉबैक क्या था, देयर वेर नो स्पेसिफिकेशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स and eukaryotic organisms. So this classification system has not properly classified into different separate groups, that prokaryotes and eukaryotes, they were in the mixed. Same, this classification system has no specification between photosynthetics and non-photosynthetic. Okay, so organisms have not been divided specifically which is the photosynthetic and which is the non-photosynthetic also. That was also the drawback system. Again, another drawback system, the organisms have not been specified between unicellular and multicellular. Unicellulars and multicellulars. So this criteria also has not been considered in this classification system. And fourth drawback, homology and phylogeny. Recently I have taken you through about these terms, homology and phylogeny. Okay, now you know that homology is the study of the similarities and dissimilarities between the species, and phylogeny is the study of
evolutionary history of the organism. So these two types of studies criteria were also not been included in this system. So that remains the drawback of the two kingdom classification system. So remember what is the two kingdom classification system, what were the drawbacks of the system, and all this thing. Now after the two kingdom classification system, there occurs the three kingdom classification system. Three kingdom classification system. Okay beta. So after the two kingdom, three kingdom classification system has come. Now who has given this classification system? First of all, this classification system was given by Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. So the scientist name, biologist name was the Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, what he did, Ernest Haeckel isolated all the unicellular eukaryotic and mostly aquatic organisms from both the kingdoms, like earlier there were the kingdom plantae, kingdom animalia. तो इन्होंने क्या किया, दोनों किंगडम से जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, बट यूकेरियोटिक जितने भी थे, और मोस्टली एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन सब को वहां से निकाला, दोनों ग्रुप से सेपरेट किया और उनके लिए अलग किंगडम बना दिया. ठीक है, तो उस किंगडम को उसने नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, सो इस तरह से थर्ड किंगडम एग्जिस्ट हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा. तो जब किंगडम प्रोटिस्टा आ गए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पहले किंगडम प्लांटे में थे, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, ये प्लांटे में थे, अब ये प्रोटिस्टा में आ गए. ठीक है, वैसे ही जो है प्रोटोजोन्स जो एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में थे, उनको वहां से निकाल दिया और इस किंगडम में डाल दिया. ठीक है, तो जब किंगडम थर्ड किंगडम बन गया प्रोटिस्टा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एंड एनिमल लाइक दिख रहे थे, उनको इस ग्रुप में डाला गया इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा, एंड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल से निकाल के इस ग्रुप में आ गए. सो दैट इज हाउ थर्ड किंगडम हैज गॉट बीन existed here. ठीक है, so remember the three kingdom classification system. Now after the three kingdom, fourth kingdom classification system has come. Okay, now this fourth kingdom classification system जो है, this system was given by the scientist named as Copeland. तो ये सिस्टम जो है कोपलैंड ने दिया. तो कोपलैंड ने क्या बोला, कोपलैंड ने इस सिस्टम को जब बनाया तो व्हाट ही डिड, ही आइसोलेटेड all prokaryotic organisms. So he isolated all the prokaryotic organisms from the earlier kingdoms like kingdom Plantae, Animalia and Protista. उन सब से उसने prokaryotic organisms को अलग निकाला और उनके लिए अलग kingdom बनाया. That kingdom was named as Kingdom Monera. So this is how the fourth kingdom
has been existed? Kingdom Monera. So Kingdom Monera contains which organisms? Kingdom Monera contains mainly the organisms called the eubacteria, which are also known as true bacteria, and archaebacteria ठीक है. So most ancient organisms, archaebacteria and eubacteria, they come under this kingdom Monera. तो इस तरह से kingdom Monera पुरानी primitive organisms के लिए अलग से एक kingdom बन गया, fourth kingdom. Now after the fourth kingdom, fifth kingdom classification, five kingdom classification system has been come. Five kingdom classification system. Five kingdom classification system जो है, it was given by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker. ठीक है बेटा. So R.H. Whitaker जो है, उन्होंने five kingdom classification system दिया. कैसे दिया? Already you know that in the earlier classification we had kingdom Plantae था ऑलरेडी. उसके बाद kingdom Protista बन गया, then kingdom Monera बन गया, फाइन, और kingdom Animalia बन गया था पहले ही. So there were already four kingdoms. ठीक है. Then R.H. Whitaker found that the fungi group is a different. Fungi are different from plants, protistans, monerans, and animals. ठीक है. So he isolated the such group of organisms who were bearing the fruiting bodies and spore producing bodies. तो उनके लिए अलग kingdom बनाया, that is the kingdom fungi. So this was the fifth kingdom class, fifth kingdom. So with that, five kingdoms have been completed. Now when the R.H. Whitaker has found these five kingdoms, but the criteria of R.H. Whitaker was different. So he took the criteria, R.H. Whitaker, he took the criteria to classify the organisms. Based on those criteria, he has given the five kingdom classification system. The criteria was, what was the cell type, okay, whether the cell is prokaryotic or whether the cell is eukaryotic. What is the body organization or cell organization, whether the body of the organism, it is made up of unicellular or it is made up of multicellular, किस तरह की body है. Then what is the mode of nutrition? Based on mode of nutrition, whether the organisms are autotrophic or whether the organisms are heterotrophic. Fine. Then what was the response to external stimuli? What was the response to the external stimuli? It is a response of the organisms, and he also included phylogeny, evolutionary history of the organisms. So these were the criteria which he took to form the five kingdom classification system, and this is the most advanced classification system which we follow presently, and nowadays we are following the same classification system. ठीक है. So remember this. इस तरीके से जो है हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला है. ठीक है. बट nowadays there is a research going on. The recent research says, the recent research or advancements जो है, according to them, there is the sixth kingdom classification system also.
there is the sixth kingdom classification system also. सो ये माना जाता है कि आज हम मोर एडवांस्ड, हम सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक साइंटिस्ट था उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पॉसिबल है। तो उसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दिया? दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज कार्ल वूस। कार्ल वूस। तो कार्ल वूस ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। तो उसमें कार्ल वूस ने क्या कहा? कार्ल वूस ने बोला कि इफ वी सी ऑल द फाइव किंगडम्स, इफ वी सी ऑल द फाइव किंगडम्स जो है, जो आपने अभी पढ़े फाइव किंगडम्स, ठीक है, किंगडम प्लाटे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, kingdom Panjai and kingdom Animalia. These were the five kingdoms. Okay. Now Carl Woos said कि जो kingdom Monera है, this kingdom Monera, it contains all the primitive organisms of two types. It is made up by all the bacteria called eubacteria or true bacteria, and in this kingdom there are a special type of bacteria called archaebacteria. Now Carl Woos said archaebacteria, these bacteria, he said archaebacteria is different from the bacteria, they are not similar to these bacteria, other bacteria. So it means archaebacteria are different from the kingdom Monera, they do not resemble to the Monera. Then he also said archaebacteria have some characteristic feature which do not match with the plants, protistans, fungi and animalia. So based on those things, what he said, especially he said in archaebacteria their cell wall is different from other bacteria, and second, their cell membrane is also different from other bacteria as well as other organisms also. ठीक है? So in that case, based on these features, he isolated the archaebacteria. He isolated the archaebacteria, whole archaebacteria, and made the separate kingdom for the archaebacteria. Then he called it Kingdom Monera has been divided into the two divisions or two kingdoms, which we called Kingdom Eubacteriae and Kingdom Archaebacteriae. Kingdom Archaebacteriae. Okay? So when we say Kingdom Monera, under the Kingdom Monera, he has taken us towards the thought process that archaebacteria is totally different from other bacteria, so they should be kept in a separate category. Okay, so he made a different kingdom for them, so it's a kind of kingdom archaebacteria. He called it Kingdom Archaea, Kingdom Archaea, Kingdom Eubacteriae. ठीक है? So अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे आप as a kingdom, so you will see Kingdom Plantae one kingdom, किंगडम मोनेरा के अंदर दो किंगडम हो गए अब, यूबैक्टीरिया एंड आर्चेबैक्टीरिया, देन these three किंगडम्स, सो ये हो गए टोटल 6 किंगडम। कितने हो गए? 6 किंगडम। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट इन दिस सेम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, रिमेंबर कार्ल वूस आल्सो सेड अस, he told that he has given the idea that these archaebacteria and these eubacteria, they both are made up of by the same type of the cell, like eubacteria, okay, kingdom eubacteria मान लो, and kingdom archaebacteria, they both are made up by prokaryotic cells. So इन दोनों में सेल कौन सी है? ये दोनों एक ही सेल के बने हैं, that is a prokaryotic cell.
ठीक है. So accordingly he made a concept which organism is made up of by prokaryotic cell which is not made up of by eukaryotic cell. So he had given the concept that these eubacterias and archaebacterias, he called them, it's a one domain. It is the one domain of life. Domain of life. ठीक है. So it means where from the life has been existed. जिंदगी, लाइफ यानी दुनिया कहां से बनी, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया जो बननी स्टार्ट हुई वो इन बैक्टीरिया, आर्चे बैक्टीरिया से बन गई, स्टार्ट हुई. उनकी सेल जो थी वो प्रोकैरियोटिक थी. क्या थी? प्रोकैरियोटिक. सो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ. एवोल्यूशन से क्या हो गया, तो ये दोनों आते हैं किंगडम मोनेरा में. ठीक है. तो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स का है. इसके बाद कौन सा किंगडम आ गया? किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. जब किंगडम मोनेरा इवॉल्व हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुई गई, तो वो यूकैरियोटिक सेल बन गई. तो यूकैरियोटिक सेल बनते ही वो किस में देखी गई? किंगडम प्रोटिस्टा में देखी गई. तो किंगडम प्रोटिस्टा इज द एवोल्यूशन ऑफ किंगडम मोनेरा. तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें है यूकैरियोटिक सेल्स. दे हैव यूकैरियोटिक सेल. फाइन. सिमिलरली किंगडम यूकेरिया के साथ किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजे एंड किंगडम एनिमेलिया. इफ यू लुक एट टू दीज थ्री किंगडम्स, अगर हम इन तीन किंगडम्स को भी देखेंगे, ये किस सेल के बने हैं? ये तीनों यूकैरियोटिक सेल के बने. ये भी यूकैरियोटिक सेल के बने, है ना. So what he said, कार्ल वोल्स ने आइडिया दिया कि these are the domains of life. All of them, they are the domains of life. जहां से लाइफ एग्जिस्ट हुई है, जहां से लाइफ बननी स्टार्ट कर दी. तो इसने क्लब किया इन तीनों को थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ में. तो उसने थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ बना दिए इस तरीके से. Then he made a concept called three domains of life. Domain, you can say, किंगडम से बड़ी कैटेगरी है. जैसे हम किंगडम पढ़ रहे थे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजे. किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी क्या है? डोमेन है. तो उसने सारे किंगडम्स को थ्री डोमेन्स में क्लब कर दिया. तो वो थ्री डोमेन क्या थे? थ्री डोमेन उसने बनाया यूबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिये, डोमेन एंड डोमेन आर्चेबैक्टीरिये, डोमेन आर्चेबैक्टीरिये 2. और थर्ड उसने बनाया डोमेन यूकेरिया और यूकेरियोटा, डोमेन यूकेरियोटा. Now if we see in three domains of the life, यानी लाइफ कहां से एग्जिस्ट हुई है? लाइफ अगर देखेंगे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले दुनिया में आर्चे बैक्टीरिया आ गए. आर्चे बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बन गए, यूबैक्टीरियाज आ गए. ठीक है. फिर यूबैक्टीरिया इवॉल्व हो गई सेल, तो ये सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स बन गए. तो यूकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे, यूकैरियोट्स में कितने किंगडम्स आएंगे? फिर यूकैरियोट्स में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे. ये सारे यूकैरियोट सेल से बने हैं, है ना. इसमें भी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी और इसमें भी. सो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड ऑल ऑफ दीज इन अ डोमेन कॉल्ड द यूकैरियोटा, डोमेन यूकैरियोटा. नाउ इफ यू सी दीज टू, this is a separate domain. He called archaebacteria is totally different. They cannot be resembled with eukaryotes, they cannot be resembled with
यूबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। तो इनका अलग डोमेन है, डोमेन यूबैक्टीरिया। सो इसलिए बन गया फिर अलग से डोमेन bacteria, eubacteria and domain archaebacteria. So these are the three domains of life where from the life has been existed, life has got been existed there. और उसके साथ उसने बोला, ये भी कंसेप्ट दिया कि ये जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, हर ऑर्गेनिज्म जो आ गया उसका कोई ना कोई एंसेस्टर है. He told that every organism, every species who has been existed in this world has any originator where from it has come. Okay, so similarly he said that कि eubacterias, archaebacterias and eukaryotes, all of these have been evolved from any ancestor. They also had been evolved from any ancestor. किसी ना किसी से ये भी बने हुए हैं. तो उस ancestor को जो है उन्होंने नाम दिया, that is the called progenote. That is known as progenote. ठीक है? So progenote is the ancestor of all of these three domains of the life. So that is the concept, that was the concept of six kingdom classification system given by the Carl Woese, that four kingdoms coming under the Eukaryota, Archaebacteria is another kingdom and Eubacteria is the another kingdom. So that is the six kingdom classification system. Okay? So this is all about the classification, kingdoms classification system, about that you have been gone through from 2 kingdom to 6 kingdom classification system. Okay? Hope you have understood this topic. Let's see in the next topic, next class. Thank you.